an equation of the form. Look at that how it is. We take like this: x power n d power n y by dx power n plus a naught x power n minus 1 d power n minus 1 into y by dx power n minus 1 plus a1 x power n minus 1 d power n minus 2 into y by dx power n minus 2 plus, if you continue this process up to an, we have to go into y is equal to some q of x we take. So what do you mean by this? What do you observe here in this equation number 1? What is the standard format to okay? You can see here x power n and d power n. The power of x and the power of derivative will be same. The power of x and the power of derivative will be same. The power of x and the power of derivative will be same. Okay, now you see x power n d power n, x power n minus 1 d power. So इस टाइप की जो भी इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे अपन? E is called Cauchy इक्वेशन बोलेंगे इसको अपन. Cauchy's Yes, sir. Cauchy's Euler equation. Now after that we have to see the procedure. Procedure is what? In this type of equation, we have to assume that put x is equal to e to the power of z. E to the power of z. जहां पर भी x है वहां पर e power z assume कर. And taking log on both sides. Log x is equals to log e to the power of z, which is becomes log x is equal to, it has become z log e. And we know that log e value is 1. So implies we say z is equal to log x. Z is equal to log x. And in place of x, we have to take as e power x. After that, wherever we have d power 3, y by dx power 3, that is x power 3 agar hai, so that replacement is, x coefficient is 1 here, 1 power 3. 3 times are there. So d into d minus 1 into d minus 2 into y. Similarly, अगर आपके क्वेश्चन में x square d square y by dx square है, which can be replaced it as 1 square d into d minus 1 into y. अगर आपके क्वेश्चन में x into dy by dx है खाली, then x is nothing but x coefficient is 1 and d by dx की प्लेस पे अपन कैपिटल d लिख सकते हैं, y as it is, and so on and so on. ये प्रोसीजर अप्लाई करके इस टाइप के कॉचीज यूलर इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. तो एक क्वेश्चन देखेंगे. We can see one question here. Now you understand the total concept, what is going on. Look at that one question we take. Okay. तो क्वेश्चन है सॉल्व एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. अब देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स minus 12y is equals to, we have x cube into log x, we have x cube into log x. चलिए अब अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब आप मेरे को पहले स्टेप नंबर 1 आप मेरे को बोलना. हम आप जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप यहाँ पर कंफर्म करना. आपको सुने आ रही आवाज मेरी? यस सर. हाँ, यहाँ पे देखिए आप, x का पावर और डेरिवेटिव का पावर सेम है या नहीं है? यस सर. हाँ, तो इन दिस इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, जिसमें x का पावर और डेरिवेटिव का पावर सेम है, उसको अपन बोलेंगे कॉचीज यूलर इक्वेशन. तो जब इसका सोल्यूशन अपन लिखेंगे, गिवन गिवन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इज इक्वल्स टू x cube log x. X cube log x is taken as equation number 1. Now we have to confirm that equation number 1. Therefore 1 is, क्या बोलेंगे इसको अपन? Cauchy's Euler equation. आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, सी ऐसा नहीं लिखना. Cauchy's Euler equation. Yes, After sir. that, immediately we have to go for its procedure. What is the procedure? Put x is equal to e to the power of z, and this implies our z value is log x, because we have already done here in this procedure. You see, procedure में ऐसा सब अपन बता दिए हैं. This one and this one I already have shown. So in the problem we don't want to write in detail. And also equation number 1 will be reduced as to x square d square y by dx square. How to write? X square means x square coefficient is 1 square. I told you that d square y by dx square can be written as d into d minus 1 into y plus 2 is a constant, and x dy by dx देखिए यहाँ पर प्रोसीजर में है पहले से, x dy by dx can be written as 1 dy. So it is 1 into d into y, okay, bracket close, minus 12y is equal to x cube value. Where is x cube? Here, from this we can get the value of x cube. कैसा होता? If I want x cube value means we should get like this: e power z whole cube, which is nothing but e power 3z. E power 3z. So it is e power 3z into log x. Log x is already, you can see here it is z. So our question is completely converted to the variable z. Now we have to solve this for the variable z. You have to solve this equation for the variable z. Now solve it for z. So how it is? If you continue this process, now look at that. 1 square is 1 only, no need of writing this. We should multiply these two. We get d into d square minus d. I am taking y common here, plus 2d minus 12, and overall I am taking y common. I am taking y common is equal to x cube into log x. Sorry, not x cube. It is already we have completed this part. This is e power 3z into z. So further, if you simplify, d square is as it is. 2d minus d is d only. Minus 12 into y is equals to e power 3z into z. Let us call it as second equation. अब यहां से आपको पता होना चाहिए
ये क्वेश्चन कौन से मेथड में कन्वर्ट हुआ, 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ या 4 में हुआ? अब आप बोलिए, अगर आप पहचान सके बोले तो फिर आपको ये करने आ गया। e⁻3x मत e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, सो मेथड कौन सा होता? हैव यू रिमेंबर दैट? इट इज एक्चुअली मेथड 4 का क्वेश्चन है। मेथड 4 में कन्वर्ट हो रहा है, मेथड 4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेथड 4 में कन्वर्ट हो रहा ना, तो अपन पहले तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होता है बोलिए? एम स्क्वायर minus प्लस m minus plus 12. m minus 12 is equal to 0. And we know that 4 3s are 12, means we get the factors are m square plus 4m minus 3m minus 12 is equal to 0. Now this can be written as taking m common, it is m plus 4. Now taking minus 3 common, it is again becomes m plus 4. M plus 4 is equal to 0. It means that we are getting two values of m, that is m is equal to 3 from here and minus 4 from here. And now you notice that we are getting two values of m, both are different. Now the way of writing the complementary function yc can be written as, yc can be written as c1 e to the power of 3. Here the variable is z, so write down z, plus c2 e power, here the variable is z, so write down minus 4. Don't write x, write down in terms of z, because we have converted our question in terms of z. So yc is done. Now we have to move on for yp. Okay now? Yes, sir. So let us move on for yp. So I'm going for yp now. Now you see how yp becomes. Our yp is equals to, this is 1 by d square. If you remember the methods, you can easily solve these questions. D minus 12 into e power 3z into z. According to the method 4, we have to bring e power 3z to this side. We have to bring e power 3z to this side, and every d is replaced with a d plus 3. That is a procedure. Put d is equals to d plus 3. फोर्थ मेथड एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। फोर्थ मेथड एक बार Yes, आप sir. से रिवाइज कर लीजिए आप, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी कंफ्यूजन आपको नहीं दिखेगा। d+3 होल स्क्वायर। और एक और सेशन भी आज मैं लेके आपको, आज ये यूनिट खत्म ही करना है कैसा भी इंशाल्लाह। और यहाँ पर बचेगा सिर्फ z। दिस इज इफ यू कंटिन्यू e पावर 3z into 1 by a square plus b square plus 2ab, and this will be added d plus 3 as it is, minus 12 into z. This is further if you simplify, e power 3z into 1 by d square 6 plus 1 7d. Okay, we are going correct only ना? सही जा रहे हैं ना अपन? Yes, sir. Yes. Okay, now this is 70 and this is I think it is cancelled. Look at that. Is it cancelled? Look at plus 9 plus 3 12 and minus 12 will be cancelling here right now. Yes, This sir. is z. Now taking e power 3z, e power 3z into 1 by d square plus 70 can be taken as d common लेके अपन d plus D 7 कर minus सकते हैं D ना plus इसको, 1. into Yes, z, sir. into z. After that, next page will be continuing. Here it is.
Okay, continue. Now look at yp is equals to e power 3z into 1 by d we write separately and 1 by d plus 7 we write separately into z. Look at this step. They are connected now. Yes. Now from this one, if you simplify, we have to take lowest degree common. That is, this is a method 2 hai ye. This is yp is equal to not 2, it is 3 e power 3z into 1 by d. According to the method of 3, we have to take lowest degree common, 7 common. It has becomes 1 plus d by 7 into z. Now brings to the numerator, yp is equals to e power 3z by 7 into 1 by d into, if you brings to the numerator, 1 plus d by 7. आपको मेथड्स याद है ना जी? मेथड्स याद है तो इजीली आप मूव हो सकते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन हाँ अप्लाई सर. करें. या बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 1 plus d whole to the power of minus 1. Binomial expansion formula. This is equal to, that is the formula is 1 minus d plus d square, and this is 1 continuing. minus d plus But d here d square. z का पावर 1 है तो एक ही स्टेज इसका बस है, एक्सपेंशन डिटेल में नहीं जाना. yp is equal हाँ. to e power 3z by 7 into 1 by d into, this if you brings to the numerator, 1 plus d by 7 raised to the power of minus 1 into z. Now if we apply the binomial expansion, this will be continuing here. Here I am continuing. This is yp is equals to e power 3z by 7 into 1 by d, and look at that. First step is 1. There only one stage will be getting d minus d by 7. Next stage is not required because z power is 1 here. This is equals to e power 3z by 7 into 1 by d into, here we have to simplify. How to simplify? 1 multiply with this value and this value multiply by z. Then how it is converted to? This is 1 into z is z only. D stands for derivative. Derivative of z with respect to z is 1 only. अब इसके बाद ये जो 1 by z है, ये 1 by d है, इसको इधर भी अप्लाई करना, and this is applying here. Actually 1 by d is nothing but 1 by d stands for integration. 1 by d is equals to integration. मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए. 1 by d is nothing but 1 by d is equal to integration. So it is e power 3z by 7. Now integration. Integration of z. It is z square by 2. Z square by 2. 1 by 7 into 1 by 7 into integration of 1 by 7 is 1 by 7 into z. This is our yp value. There is no more d value, so we can stop. So finally, therefore, the solution is, I think I should write here in this page. Yeah, here I will write it. इसमें अपन yc plus yp बोल के नहीं लिखते वो सर. लिख रहा हूँ जी, अभी लिख रहा हूँ. Just next page I am writing. I'm writing that. Therefore, the general solution is y is equal to y complementary function plus y particular integral. This is equal to y complementary function is, we are getting what we are, c1 e power 3z plus c2 e power minus 4z. c1 e power 3z plus c2 e power minus 4z plus yp can be written as this one, e power 3z by 7, e power 3z by 7 into z square by 2
minus 1 by 7 into z. But now you see, I don't want to stop your problem here only, because you see our question is given in terms of x here. x में है, तो आंसर शुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ z. इसको भी अपन फाइनली अपन क्या करना बोले तो इसको फिर x में कन्वर्ट करके रखना. y इज इक्वल टू c1 इज c1 ओनली e पावर 3z. e पावर 3z की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या हो जाती है, x क्यूब हो जाती ना. इट इज x क्यूब यस सर. प्लस c2 इंटू ये होता है x पावर -4. ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस डिनोमिनेटर 7 एज इट इज. e पावर 3z इज नथिंग बट x क्यूब into divided by 2, write down as it is, z value. If you see our z value is log x. You see here log x, so it is log x, and that square is also there, log x square minus 1 by 7 into z value is one more time, it is log x. ये close it and ये finally आपका प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट. एक बार आपको फर्स्ट पेज से देखना है तो देख लो, कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो नहीं बोल. सर, मेरे को समझ में आ गया. माशाल्लाह, वेरी नाइस. ओके, एक और क्वेश्चन जाएंगे अपन. यस We'll सर. go for one more question, right? आप ऐसा मेरे को मैसेज कर दिए तो मेरे को भी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहता हूँ कि आपको अब कहीं भी जाना नहीं है, मेरे को आपकी क्लास लेना है बोल के. कल भी मैं वेट करा, आपका रिप्लाई कुछ भी नहीं आया. Second question in this category, we are moving now. The question is, it says that x cube. अच्छा, ये क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है ये कौची इसका क्वेश्चन है बोल के. मैं आपको हिंट दे दिया, कैसा पहचानना है. एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2x है इसमें. एक बार पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको उसका हिंट देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट बोल के. प्लस 2xy is equal to 1. Now what I said, according to the definition, you can go to the previous pages. What I said the definition, the power of x and the power of derivative must be same, I told. अगर ऐसा हो रहा तो वो कॉची हाँ. यूलर इक्वेशन है. ऐसा हो रहा क्या यहाँ पर, ऐसा कहीं तो भी देखिए, यहाँ हो रहा है ऐसा, नहीं हो रहा ना, डिफरेंट है. ये क्वेश्चन में हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो अपन बनाना उसको कैसा करेंगे, यहाँ से एक एक्स को निकाल देंगे. ठीक है, डिवाइडिंग एक्स ऑन बोथ साइड करेंगे. अच्छा. ठीक है ना, डिवाइडिंग ओके एक्स ऑन सर. बोथ साइड. सोल्यूशन, dividing, I have to convert this question into the Cauchy's form. X on both sides. We get our question is, tell me how. X square d square y by dx square. Okay. And now tell me minus. Come on, बोलिए. Minus 2x -2x minus dy by dx exactly 2x dy by dx प्लस plus 2y. 2y is equals to 1 by x. Is it okay? यस सर. I want to call it as 1. Now I can say, I can confirm that, therefore I want to say here their equation number 1 is, what do you say, क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम देंगे, कॉची Cauchy's यूलर. Euler equation. Cauchy's Euler यूलर equation. इक्वेशन. After that, immediately we have to write the procedure. What is the procedure? Put, once it is confirmed that I can replace x with e power z. Okay, and that implies that I can say our value of z is equal to log x. Okay, now this equation number 1 will be reduces to, according to the procedure, x square d square y by dx square can be written as 1 square d into d minus 1 into y. Minus 2 is a constant. X dy by dx can be written as 1 dy plus 2y is equals to 1 by x. If I want 1 by x, देखिए इधर x अगर e power z हो रहा,
So if I want 1 by x, matlab reciprocal. Matlab what? 1 by e power z. But 1 by e power z is nothing but e power minus z only, na? Yes, sir. ये डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिखेंगे. Only for understanding. Here I can write it. This is, I can write it as e power minus z. After that, if you further simplify here from this, if you take y common, okay, I will make a margin of this. Now continuing. Y common means here we multiply d square, and this is minus d, and this is minus 2d. I am taking y common actually. Sorry, यहाँ पर plus 2 भी है. I am taking y common is equals to e power minus z. Okay, then if you simplify, we get d square minus 3d, d square minus 3d plus 2 into y is equals to e power minus z, e power minus z. Okay, अब इसके बाद इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद का प्रोसीजर आप खुद बोलना मेरे को. बोलिए. कम ऑन, कम ऑन. यस, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, n square minus 3m plus 2 yes, very good. m square minus minus 3m 3m plus plus 2 2 is equals to 0. is equal to 0. Now, what are the possible factors? Come on, m minus 1. Even you can use the calculator for this, or you can directly also write it. M minus 1 into m minus 2 is equal to 0. I can say the values of m are 1 comma 2. And now my yc becomes, complementary function becomes c1 e power z here, be careful, plus c2 e power 2z here. Okay, 2z here. क्वेश्चन z में कन्वर्ट करे थे अपन. यस और नो? Yes, sir. चलिए, Yes. अभी आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज, मेक ए मार्जिन ऑफ दिस. नाउ राइट डाउन yp. yp is equals to 1 by d square, tell me what, minus 3d plus 2 Minus 3d plus 2. e power minus z. ये कौन सा मेथड है? आसानी से बोल सकते हैं ना इसको. तो मेथड 1 है ना जी. Yes, sir. रूल क्या है बताइए. पुट पुट d is equal to, x कोफिशिएंट लेते हैं यहाँ पर, z कोफिशिएंट है -1, तो becomes, if you simplify, -1 whole square plus 1, yes, 1 by -1 whole square plus 1, minus into minus plus 3 plus 2 into e power minus z. Therefore yp is equals to, what do you say, 1 by 6 into e power minus z, right? उसके बाद आपको पता है जनरल सॉल्यूशन कैसा लिखना है. Yes, sir. The general solution is, y is equal to y complementary function plus y particular integral. So y is equals to, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने पास है, कितना है भाई, यहाँ पर ही है, C1 is c1 e पावर z प्लस c2 e पावर 2z, c1 e पावर 2z प्लस yp अपने पास है 1 by 6 into e power minus z. But I said that my question is given in terms of x, so my answer should be in terms of x only. y is equal to c1 into e power z की वैल्यू अगर आप देखें कितनी है भाई, e power z की वैल्यू x है ना. yes, sir. दिख रहा ना आपको, यहाँ पर है x, इट इज x प्लस c2 इंटू e पावर 2z बोल तो नथिंग बट x स्क्वायर हो जाता, प्लस 1 बाई 6 इंटू e पावर माइनस z की वैल्यू होती 1 बाई x. दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट्स इट. ओके. Yes, sir.
तो ये आपको दो क्वेश्चन हुए, आपको और भी क्वेश्चन होना है। एक काम करेंगे, ये और एक क्लास आपको मैं लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये थोड़ा मीटिंग कन्वर्ट होते कि एक और सेशन करेंगे अपन आज अभी अभी करेंगे, ठीक है? ओके सर। अभी कर लेंगे, आपके थोड़े क्लासेस मिस हुए ना। अभी मेरे पास टाइम तो है, अभी फोन कॉल्स कुछ भी नहीं आ रहा, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। तो फिर अपन एक और सेक्शन अभी कर सकते हैं। मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ थोड़ी देर में, फिर आपको लिंक डालता हूँ, आप ज्वाइन करिए। ठीक है? ओके सर। ओके, राइट। ओके सर। थैंक यू सर।